Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Today's our topic is trick to find out geometry shape of the molecule from lone pair and bond pair by using valence shell electron pair repulsion theory. Now let's start the session. So first of all, the main postulates of this theory is that geometry of molecule is depends on number of valence electrons. Geometry किस पे डिपेंड होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दैट इज द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर्स एंड द मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर लोन पेयर्स. तो इससे हमें एक टेबल याद रखना है. लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, arrangement and their shape, arrangement of electron pairs. Suppose the molecule contain 2 bond pair, 0 lone pair, 2 plus 0 is the 2. If then the hybridization is sp hybridization. S1 P1 1 plus 1 2, and their arrangement of electron pair is linear and their shape is also linear. If bond pair is 2, lone pair is 1, 2 plus 1 is equal to 3. Then hybridization is sp2, 2 and s1, that is 3, sp2 having geometry trigonal, planar, and shape of this molecule is bent or V shape. Bond pair 2, lone pair 2, 2 plus 2, that is 4. 4 steric numbers और number of orbitals 4 के लिए hybridization आएगा sp3, tetrahedral geometry and V shape. Then bond pair 2, lone pair is 3, then hybridization 2 plus 3 is the 5, sp3d, 3, 4, 5, and their geometry is trigonal, bipyramidal, and shape of the molecule is linear. Now bond pair 3, lone pair 0, then hybridization is sp2. In sp2 hybridization, geometry is trigonal, planar, trigonal, planar. 3 plus 1 is equal to 4, sp3. sp3 के लिए टेट्राहाइड्रल, एंड अगर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या आएगा? पिरामिडल शेप, एंड विदाउट लोन पेयर देन शेप इज द टेट्राहाइड्रल. sp3 tetrahedral, tetrahedral, sp3 when 1 lone pair is present then shape is the pyramidal shape because presence of 1 lone pair. Now 3 plus 2, bond pair 3, lone pair 2, 3 plus 2, sp3d, 3, 4, 5. sp3d contain trigonal, bipyramidal. यहाँ पे again sp3d shape is the trigonal, bipyramidal. If 2 lone pair is present then sp3d में shape क्या आएगा? T shape. 1 lone pair is present then the shape is seesaw, and 0 lone pair is present then shape is the trigonal, bipyramidal. Now again 4 plus 0, 4, sp3 tetrahedral, 4 bond pair, 1 lone pair, sp3d trigonal, bipyramidal, seesaw shape. 4 plus 2, 6 means octahedral geometry. When 5 bond pair, 0 lone pair, then sp3d. In sp3d trigonal, bipyramidal, shape is also trigonal, bipyramidal. Here it contains sp3d and sp3d. Shape is changed because lone pair electrons are changes. Now when bond pair is 5, lone pair is 1, then hybridization is sp3d. 5 plus 1 is equal to 6. 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6, that is octahedral geometry, and their shape is a square pyramidal. Again it contains also bond pair 6 plus 0, 6, sp3d. यहाँ पे shape क्या आएगा? octahedral shape because absence of lone pair. Now bond pair 6, lone pair is 1, then sp3d3, 3 plus 3, 6 plus 1, 7, that is distorted octahedral shape. 7 bond pair, 0 lone pair, hybridization is also sp3d3, pentagonal, bipyramidal, and shape is the pentagonal bipyramid.
यहाँ पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, हेंस देयर शेप इज द डिस्टॉर्टेड octahedral shape. From this chart, we can easily find out the geometry of the molecule by using bond pair and lone pair of electrons. तो हम क्वेश्चन है हमारा IF5, तो IF5 की हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है. तो पहले हमें क्या चाहिए, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने. तो आयोडीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज द ग्रुप 17 एलिमेंट्स. तो मैंने एक वीडियो बनाई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइंड आउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्लीज गो टू दैट वीडियो. नाउ आयोडीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड है, तो क्या करेंगे हम 7 माइनस 5 करेंगे. 7 माइनस 5 इज द 2. 2 मीन्स क्या प्रेजेंट होंगी, 1 lone pair. 2 means 1 lone pair is present. That is IF5 contain 5 bond pair plus 1 lone pair. 5 plus 1 क्या आ गया, 6 स्टेरिक नंबर. इन 6 स्टेरिक नंबर में क्या आता है, देखो हमने अभी यहाँ पे टेबल में लिखा 5 bond pair and 1 lone pair is equal to 6. That is sp3d2 hybridization and arrangement of electron pair is octahedral and their geometry is a square pyramidal. That is 5 hybridization is sp3 3 2 5 and 1 6. That is sp3d hybridization. Their geometry of IF5 is octahedral geometry. Their geometry is octahedral and shape of the molecule is square pyramidal. Shape of the molecule is square pyramidal. That is iodine is present at the center, 5 fluorine atoms bonded with iodine in this way and 1 lone pair is present. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है I3 प्लस. यहाँ पे सेंट्रल पे एटम्स भी आयोडीन है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज हुए हैं सेंट्रल एटम्स पे वो भी आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे. द आयोडीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 7 माइनस पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे हम 1 चार्ज को माइनस करेंगे. 1 मीन्स पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 7 माइनस 1 इज द 6. यहाँ पे आयोडीन 3 आयोडीन है. अगर 1 हम सेंटर पे ले रहे हैं तो 2 आयोडीन्स हमें काउंट करने. तो हम ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो ले रहे हैं वो किसके ले रहे हैं, हम सेंट्रल आयोडीन के ले रहे हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस आयोडीन 2 बॉन्ड पेयर, दैट इज 2 आयोडीन की बॉन्ड पेयर माइनस करेंगे. दैट इज 6 माइनस 2 इज द 4. 4 मीन्स क्या आएंगे, 2 लोन पेयर. दैट इज I3 कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. दैट इज 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 4. एंड इन 4 स्टेरिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 4, देन देयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 hybridization. And in sp3 hybridization geometry is tetrahedral geometry. Geometry is tetrahedral. यहाँ पे geometry tetrahedral आ जाएंगी. एंड शेप 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो शेप क्या आ जाएगा डायरेक्टली V शेप. दैट इज I3 कंटेन V शेप. तो मैं से अगर ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है तो क्या करेंगे हम, आयोडीन इज एट द सेंटर, V शेप है, इट इज सेकेंड 2 आयोडीन एंड दिस 2 लोन पेयर्स. These are the 2 lone pairs and 2 bond pairs with V shape geometry. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड SO2. In SO2 sulfur is at the center and which contain 6 valence electrons. That is 6 minus. Oxygen is a divalent atom. Then oxygen 1 oxygen के लिए 2 electrons, then 2 oxygen के लिए क्या करेंगे हम 4 electrons. That is 6 minus 4 is equal to 2. 2 means what? 1 lone pair is in sulfur dioxide. 2 bond pair and 1 lone pair is present. That is हम ऐसे भी लिख सकते 6
electrons, 6 valence electrons of sulfur. This 2 means 1 oxygen and this 2 is the 1 lone pair. That is, it contains 2 bond pair and 1 lone pair. 2 plus 1, 3. And in 3, the hybridization is sp2. That is 2 plus 1, 3. Hybridization is sp2 hybridization. Their geometry. In sp2 hybridization, geometry is trigonal planar geometry. And their shape of the sulfur dioxide is V shape, bent shape और angular in shape. तो V shape कैसे आएगा? Sulfur is present at the center. Oxygen can form double bond and 1 lone pair is present. This is the 1 lone pair is present in sulfur. That is, shape of the SO2 molecule is V shape. In this way, we can easily find out the geometry, shape, lone pair and bond pair by subtracting the bond pair into valence electrons. That is, यहाँ पे जितने number of atoms से उतने क्या करने वहां से subtract करने. Only oxygen is the divalent. एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें subtract करने from the valence electrons. Find out the geometry by using this chart. I hope you like this video. Then please like, share and subscribe my YouTube channel.